Namaste everyone, welcome back to the new video. Today we will learn basics of pharmacovigilance. So what is pharmacovigilance? Pharmacon means drug and vigilance means to keep watch. That means to keep watch on a drug. What does it really mean? To keep watch on a drug means to keep watch on a drug's effect. Actually which effects drug is showing. That means whether drug is showing desired effect or showing some unwanted effect. This is called as pharmacovigilance. So what is the definition of pharmacovigilance according to WHO? Pharmacovigilance is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other medicine related problem. So pharmacovigilance is the science and activities. We perform your activities to detect the adverse effects. Simplest definition. Let's start with the history. What happened in history which forced us to develop pharmacovigilance? First, sulfanilamide disaster. In mid 1937, the Massengill Company sold the medicine for streptococcal infection in powder and tablet form. The difficult to dissolve antibiotic sulfanilamide was mixed with solvent diethylene glycol, a known toxin. The preparation was called elixir sulfanilamide by the addition of raspberry as a flavoring agent. The company tested it only for its appearance and palatability before nationwide distribution. More than 100 US citizens, many of the children, died due to renal failure after consumption. This is the first incident happened in the mid of 1937. Next, thalidomide tragedy. Thalidomide, which is marketed in 1957, a German drug company developed and sold the drug as a sedative or hypnotic. It became rapidly popular as over-the-counter drug for the treatment of nausea and vomiting in early pregnancy. Shortly after the drug was sold, between 5,000 to 7,000 infants were born with phocomelia, that means malformation of limbs. Throughout the world, about 10,000 cases were reported and only 50% survived. The drug was banned in March 1962. This is the phocomelia, images of the childs born with phocomelia, malformation of the limbs. These two incidents makes humans to develop pharmacovigilance. So what happened after these two incidents? In response to the sulfanilamide disaster, the Drugs and Cosmetic Act 1938 was made, in which manufacturer would have to show scientific evidence of the safety of the drug. And in response to the thalidomide disaster 1962, the amendment of the Harris Amendment on the Drug Efficacy Amendment was made in 1962. According to it, the scientific evidence of efficacy and safety of drugs are required before drug tests or trials in humans, which was the thalidomide disaster or thalidomide tragedy was the pioneer of pharmacovigilance. Next, these are the two most important concepts in the pharmacovigilance: adverse drug reaction and adverse event. We have seen the definition of pharmacovigilance according to WHO. What was it? Pharmacovigilance is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effects. So, what are the adverse effects? In simple language, adverse effects are the unwanted or unintended effect. Which is the adverse effect. In Marathi, you can say that प्रतिकूल. तुम्ही जर एखादं टॅबलेट किंवा एखादी कॅप्सूल कोणताही ड्रग घेतला असेल आणि तुम्हाला जो इफेक्ट हवा आहे तो इफेक्ट न मिळता दुसरा अनवॉन्टेड किंवा हार्मफुल इफेक्ट मिळत असेल तर त्याला म्हणायचं ॲडवर्स इफेक्ट. सो what is adverse drug reaction? What is difference between adverse drug reaction and adverse event? First, let's clear the definition. Adverse drug reaction: a response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in a man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of the disease or for the modification of physiological functions. And
Adverse event. It is any untoward medical occurrence in a patient or a clinical investigation subject administered with a pharmaceutical product and which does not necessarily have to have a causal relationship with this treatment. This is the definition of adverse event. Let's understand it in a simple language. Suppose I have administered tablet of a XYZ company to treat headache, but instead I got rashes on my body. अगर मैंने हेडेक ट्रीट करने के लिए टैबलेट ली और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट मुझे मेरी बॉडी पर रैशेस आ गए, तो वो जो रैशेस मेरी बॉडी पर आ गए वो क्या हुआ? एडवर्स इफ़ेक्ट. और अगर ये एडवर्स इफ़ेक्ट वही स्पेसिफिक टैबलेट की वजह से हुआ तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है. और अगर ये प्रूव नहीं हुआ कि वो टैबलेट की वजह से ही रैशेस आ गए तब तक वो एडवर्स इवेंट रहेगा. एडवर्स इवेंट एक स्टेज है. जब तक ये प्रूव नहीं होता कि जो एडवर्स इफेक्ट आ गए, जो एडवर्स इफेक्ट है वो एडवर्स इफेक्ट सस्पेक्ट ड्रग की वजह से ही आए हैं, ये जब तक प्रूव नहीं होता तब तक वो स्टेज एडवर्स इवेंट कहलाती है. इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? जो मैंने ब्लू में देखा है, ब्लू में लिखा है, आप पढ़ सकते हो. which does not necessarily have to have a causal relationship with this treatment. ये causal relationship क्या? Causality is nothing but the relationship between suspect drug and adverse event. यहाँ पे सस्पेक्ट ड्रग कौन सा? जो ड्रग मैंने लिया था, जो टैबलेट मैंने ली थी हेडेक ट्रीट करने के लिए, वो हुआ सस्पेक्ट ड्रग. अब तक वो सस्पेक्ट है क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ कि उसी वजह से रैशेस मेरी बॉडी पर आ गए. तो सस्पेक्ट ड्रग क्या हुआ? जो टैबलेट मैंने ली थी हेडेक ट्रीट करने के लिए. रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेक्ट ड्रग एंड एडवर्स इवेंट. एडवर्स इवेंट क्या? रैशेस, मेरी बॉडी पर रैशेस आना, ये क्या हुआ? एडवर्स इवेंट. इवेंट क्यों बोल रहा है इसे मैं एडवर्स इवेंट? क्योंकि अब तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये जो रैशेस मेरी बॉडी पर आ गए वो रैशेस उसी ड्रग की वजह से आए. ये हुआ कॉजैलिटी, दैट मीन्स कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेक्ट ड्रग एंड एडवर्स इवेंट. एंड इफ द कॉजैलिटी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि रैशेस उसी ड्रग की वजह से आ गए. जब कॉजैलिटी पॉजिटिव हो जाए तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है और तब तक एडवर्स इवेंट कहलाता है. समझ गए? गुड. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स इवेंट सिनोनिम्स क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के? एडवर्स रिएक्शन, अनडिजायरेबल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट. कॉजैलिटी ऑलवेज रिलेटेड. एडवर्स इवेंट में कॉजैलिटी मे और मे नॉट बी रिलेटेड. ये क्यों है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कॉजैलिटी ऑलवेज रिलेटेड मतलब हमेशा कॉजैलिटी पॉजिटिव ही आती है. इसका मतलब क्या कि हमेशा जब जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तब तक वो जो एडवर्स इफेक्ट हुआ है और वो जो अनवांटेड इफेक्ट हुआ है वो सस्पेक्ट ड्रग की वजह से ही हुआ है. जब भी प्रूव होता तो अब उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं. इसीलिए उसमें कॉजैलिटी ऑलवेज रिलेटेड आती है. और एडवर्स इवेंट में मे और मे नॉट भी, मतलब ये हो नहीं ये हो भी सकता है कि एडवर्स इवेंट में वो ड्रग की वजह से ना भी हो. इसीलिए यहाँ पे कॉजैलिटी फिक्स नहीं रहती. ठीक है. नेक्स्ट, ये एक सेंटेंस, इससे आप सब कुछ समझ जाओगे. ऑल एडीआर्स आर एईज, मतलब हर एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इवेंट होती है. बट नॉट ऑल एईज आर एडीआर्स. बट सब एडवर्स इवेंट एडीआर नहीं होते. अगर अगर एक एडीआर है, एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो वो एई है. एडवर्स इवेंट के बाद ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है. बट सब एईज जो होते वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होते. समझ गए? वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सेंटेंस. और ये सेंटेंस आप दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता सकता है. नेक्स्ट, इस ग्राफ से समझते थोड़ा सा, फ्लो चार्ट से, सॉरी. पेशेंट टेक्स ड्रग. सपोज मैं पेशेंट हूँ, मैंने एक स्पेसिफिक ड्रग लिया स्पेसिफिक कंपनी का. मुझे फिर पेशेंट फील्स अनवेल, मुझे कुछ अनरेस्ट लगा, कुछ अनवांटेड चीज़ें या रिएक्शन मेरी बॉडी पे आ गई. तो क्या करेगा? एक तो पेशेंट केमिस्ट के पास जाएगा कि मुझे ऐसी ऐसी रिएक्शन आ गई है, या फिजिशियन के पास जाएगा. केमिस्ट, फिजिशियन वो सब क्या करेंगे? कंपनी को रिपोर्ट करेंगे. जिस कंपनी का वो ड्रग है और टैबलेट है कंपनी को रिपोर्ट करेंगे. वो कंपनी क्या करेगी? उस कंपनी फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी कि ये रिपोर्ट है फार्माकोविजिलेंस. हर एक कंपनी का फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है.
मे बी वो थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो। तो उसके बाद फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट की कॉजलिटी चेक करेंगे, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कॉजलिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उस कंपनी के उस ड्रग की वजह से वो स्पेसिफिक रिएक्शन आ गया, मतलब एडीआर आ गया। ये काम होता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का। थैंक्स।